of living foundation, and he takes courses on like mind mastery to like leading companies of India, uh, let it be Tata's or Maruti or Google or anything like that. So he's you can say him a great teacher. Okay, you can know him as like a great teacher and a mentor for things like mind management. Okay, and in the life, how to live life happily and these kinds of things. Okay, so this is Nikhil sir, and okay sir. So this is like a basic intro for him, and we are here to listen about his experience of life and know about him, as he can like guide us really well in about life and about happiness on all these things. So now I would like to ask Nikhil sir to speak about himself and share his life experience and life story. Thank you so much, Sevak or Prakhar. That was a very nice intro. अब उसको follow करना काफी मुश्किल है. उतना अच्छा तो मैं बता नहीं हो पाऊंगा कि नहीं एक conversation में. नहीं sir. So, no, before I get started here, अच्छा, is there anyone who wants this only in English? कोई है जिस No. कोई है जिसको सिर्फ हिंदी में चाहिए? No. You can ठीक है. write in the Nomai channel of course. हाँ, I'm looking at the Nomac also. So ठीक है. So then we'll do a mixture of Hindi and English. Yeah? तो बिफोर आई गेट स्टार्टेड है, मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहूंगा कि चलो आप लोगों ने कुछ तो देखा, कुछ कुछ हमने लिख के भेजा था कि इवेंट में क्या है, कौन हूं मैं, पर आप क्यों आए? एक पुराना गाना था ना, तो लाइक आप यहाँ आए किस लिए? तो एक एक लाइन में अगर कुछ लोग बता सकते हैं कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा, आप क्यों आए इधर पे? So a few people are saying to speak in English, so you can also try to. Okay, Black Magic is saying in English. Okay, so I'll then repeat in Black Magic. Black Magic, I'm asking that what interested you to come for this session? Why did you come in? Okay, it was a freeze to past time. Stanley's saying. I'll put this here so I can easily see it. Knowledge के लिए Psycho Priest is saying. You can also unmute and say, huh? Yeah, please speak. अगर आप बोल सकते हैं तो please. Nikhil sir, it's absolutely fine. I'm comfortable with both the languages. Hindi भी आती है. अच्छा ठीक है जी, thank you. For inspiration in my adventurous life. Okay, thank you so much. Camellia and Papu are typing something. To learn something, Camellia says. All right. See, तो मेरा intention ये था आज के session के लिए that we. अच्छा, Papu says sir is a nation where Hansa ji makes yoga videos. Oh बाप रे, Papu, I have no idea man. मुझे नहीं पता. बहुत सारे लोग हैं Art of Living में. अब उसमें कोई तो हंसा जी होंगी जो वीडियो भी बनाती है तो मेरा इंटरेस्ट था यार कि आई जस्ट वांटेड टू हैव एन इंटरेक्शन विद यू गाइस. हमारी बात होनी शुरू हुई थी प्रतीक सर से और प्रखर की और मेरी. दे सेड कि यहाँ पे लोग हैं जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं. एंड मैंने बोला यार मतलब थोड़ी बहुत तो गलतियां मैंने भी करी लाइफ में, मैं भी कुछ बता सकता हूँ 2-3 चीज़. तो आज का सेशन का बस यही है कि थोड़ी सी गपशप करेंगे. आई विल टेक अ फ्यू मिनट्स बिगनिंग में just to share about my life story, just to share what all I have done, and then we'll just have some open question and answers. ठीक है, आपकी परमिशन है इसके लिए? अच्छा, मेरे को ना बहुत वीडियो की आदत है यार. मतलब नॉर्मली व्हेन आई टेक ऑडियो वीडियो द ऑनलाइन सेशंस वी ऑलवेज हैव पीपल ऑन वीडियो. आई नो यहाँ पे उसका रिवाज नहीं है, बट एटलीस्ट आप फिर मुझे चैट में तो बताओ yes or no. या yes, बिल्कुल बिल्कुल. Okay. So, okay, thank you. I got all the responses. Thank you so much. English is possible. Okay, Camellia, I'll try to keep more English. So my life story, yeah, matlab, see, like all of you, I was also once in my early career stage, या तो school में था or I was in college and trying to figure life out. But I think I'll start from a little while back. So I think the first major thing that happened in my life was, I topped class 10th boards of CBSE.
So for which actually then I got then I wrote the Singapore Airlines exam, which I didn't go. Why, I'll tell you later. But then I also got invited by the President of India to watch the Republic Day parade with him, and again I did not go. उसका वाई बड़ा सिंपल था because I was like यार मैं ना IIT की तैयारी कर रहा हूँ, तो I don't have the time. मैं थोड़ा पागल था उस तरीके से. तो बस मेरे साथ ये था कि जो भी मैं करता था ना, I would do it fully. मैं ऐसे पूरी शिद्दत के साथ करता था जो भी मैं करता था. So even class 10, what I ended up topping all India, I had no aim. मेरा कोई intention नहीं था मुझे ऐसा कुछ करना है. मैं तो बस पढ़ाई कर रहा था अपने हिसाब से. And I just like gave it my full attention. मैंने अपना पूरा ध्यान उसको लगा के किया था और उसका रिजल्ट आ गया. ऐसे ही मैंने पूरा ध्यान लगा के IIT की तैयारी करी. And I cleared JEE. So first time I cleared JEE, I got a rank, I got an admission into a IIT, but it was not a branch of my liking. So then I decided कि no, I will write JEE alone. That is why, मेरे intro में था कि that's where I said कि okay fine. First time I didn't go. I cleared JEE twice. Second time I got a good rank. I got 141 rank. Then that time I got a admission into electrical engineering in IIT Kanpur, and then I sort of went from there. Now, why I wanted to go to IIT was like मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ, ठीक है. Even though I had ended up topping 10th, but I wanted to go to IIT to prove to myself कि नहीं मैं बेवकूफ नहीं हूँ. And the funny thing was, when I reached there, I realized, yeah, most of the people who come there are also not very sure of why they have come there. सब लोग ऐसे ही भीड़ चाल में चलते चलते आ गए थे, और वहां पहुंचने के बाद लोग देखना शुरू करते थे अच्छा मैं करूंगा क्या. उसी तरीके से then once I finished my graduation also, तब तक भी मैंने अपना सीखा नहीं था. तब भी मैंने यही किया कि जो भेड़ चाल चल रही है जहां चल रही है I will go in that direction. So I sat for interviews. I got into an oil industry company. I wasn't very happy in that company that I was in. I somehow knew from the starting कि मुझे कुछ और करना है लाइफ में, पर क्या करना है नहीं पता था. तो ये एक अच्छी चीज होती है कि अगर आपको नहीं पता है क्या करना है तो जो भी सामने आ रहा है उसको करते जाओ. At least after doing something for a while, you'll understand. You will get some new experiences. You'll get some new data. You'll meet some new people, and that can help you understand what you want to do. So I did that for about 10 years, पर मुझे तब भी समझ नहीं आया मेरे को करना क्या. Finally, I just reached a point where I was like, यार ये तो नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है. I'm just going to quit my job and go into the task of finding out what I want to do in life. So I quit my job. My boss was just not ready to accept. He was like, तू दूसरी कंपनी में जा रहा है ना? I said नहीं जा रहा हूँ. वो मुझे धमकी. So my boss was very close to me. He said, तू गया ना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा. I said, don't worry. If I go, you definitely come and beat me up. I will not stop you. So I left my job, and then I spent 1 year trying to figure out, going and meeting all my different friends, going and looking up different experiences. I went and I sat in the offices of a few friends. I went and I talked to a lot of people. And in that, I tried to figure out what I wanted to do. Then I got into a startup, which was an artificial intelligence startup. And then I started learning what artificial intelligence was. So we were trying to apply artificial intelligence to oil industry. उसमें भी हमें success मिल गया. We were getting funding coming. We were about $1 million की funding आ रही थी. But then an option came in front of me, which made me realize that, oh, this is exactly what I want to do. By this time, I had spent so much time, trying to find out what I wanted to do. कि जब वो option मिली, then I was very easy. I was not even afraid कि हाँ ये $1 million funding मैं छोड़ के जा रहा हूँ. Because I knew that finally it's not money which made me happy. Because when I was in oil industry, I was earning tons of money. That was the most highest paying job in India that year when I passed out. I was earning a lot of money, but I was not happy. So then I got a job in which I don't earn much. I earn 5% of what I used to earn. Okay. But when you are doing something, यहाँ पे एक चीज होती है कि मैं सवेरे ना मुझे उठने में कभी दिक्कत नहीं होती है. मैं अपनी जब नौकरी में था, एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू गेट अप एंड आई वाज लाइक यार मैं क्यों उठ रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ ऑफिस. लाइक वो स्कूल में भी जैसे कभी कभी होता ना मेरे को नहीं जाना, वैसा होता था. बट हियर आई डोंट फील लाइक दैट. सो दैट्स व्हाट आई रियलाइज्ड दैट to be really happy in life, you have to do what you feel like and you want and you connect with.
But don't think that will come easily, huh? Most people don't find jobs like that. Most people don't find work like that because most people don't even try. But if you try, you can. That is not just my story. I have so many friends who have that story. In my own family, a lot of people have that story. So we'll go deeper into that story when time comes. तो ये था मेरा छोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन. तो आजकल मैं फिर अब क्या करता हूँ कि तो मेरे को ये समझ में आया कि द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस. हमारे से अपना ही ब्रेन नहीं हैंडल होता. True. ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर ओन इमोशंस. हमें पता है, एवरी वन ऑफ यू नोज मेरे को लाइफ में क्या सही है, व्हाट ऑल शुड आई बी डूइंग. बट हो पाता है क्या? वी ऑल कीप स्ट्रगलिंग. नो, आज मोटिवेशन नहीं है, आज मूड नहीं है, आज मैं फोकस ही नहीं हो रहा है, कंसंट्रेट नहीं हो रहा है. यस, होता है. Yeah, of course. तो It happens. दैट इज व्हेन व्हाट आई गॉट इनटू. अरे यार, ये समझना है. बाकी तो ठीक है, टेक्नोलॉजी इज सिंपल इनफ, इट्स मच सिंपलर देन दिस. So I went deep into that. I spent a couple of years just going very deep into things like meditation, understanding, yoga, into very deep Indian spiritual knowledge. And wahan se we found that there's a lot that is very practical, which is needed in day-to-day life. So today, now we take all this information to all the companies. The companies are all very, very understanding and appreciative of it. उन सबको पता है कि यार हमारे लोग जो है ना दिल से खुश होंगे ना, तभी अच्छे से काम कर पाएंगे. तो they pay us a lot of money for that. And we also teach, otherwise also I teach normal open programs also and share all this knowledge with her. So that is my छोटा सा story. So I think I can see a lot of questions and all have come. So if anyone wants to unmute and ask, otherwise, or anything else, any clarification you want, you can ask me. Otherwise, I'll start looking at the questions. Sociopath saying, hi, I'm new, what's going on? Can someone please explain? Sociopath, we're just interacting, man. Which IIT did I go into? Stanley is asking. I went to IIT Kanpur. And oil industry from electrical department, Stanley saying. Yeah, Stanley. The oil industry is like any other industry, man. Any big industry has all kinds of departments in it. So obviously I had to learn a lot of oil field engineering, and I had to learn a lot of industry specific knowledge. So you learn. That's not a problem. Pappu says, but sir, once you reach 20 to 23, you can't really afford to do jo karna hai, wo karo. At least this is what I'm saying with me. You face some resistance with society. Just a question I have in mind. Pappu yaar, wo jo bahar ki resistance hai, that will come till you are not clear inside. It is never the society. I will tell you, there have been a lot of time in your life when you were clear मेरे को क्या करना है. The society was not agreeing. Mummy Papa was not agreeing. You were like, नहीं मेरे को आज movie देखने आनी है. Mummy Papa were not in agreement. But when you were clear मेरे को जाना है तो जाना है, तो then you will go and do it. Then you will have that strength. It is always how much conviction we have. And it doesn't come in. I'm not saying कि आज तुम बैठ के रात में decide करो, your conviction will come. No, you have to go after it. उसके पीछे आपको टाइम बिताना पड़ेगा. आपको you'll have to take some steps. प्रैक्टिकल कुछ छोटे छोटे पहले आप कदम उठाते हो, फिर उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर और बड़ा कदम उठाते हो, फिर और कॉन्फिडेंस आता है, ऐसे चल के आता है. एंड समटाइम्स इट इज नॉट इवन इजी. लाइक मेरे को भी, आई कुड डू ऑल दैट आई डिड बिकॉज मैंने पहले 10 साल मरा ही यार. मैंने 10 साल बैठ के खूब सारा पैसा बचाया. देन आई कुड अफोर्ड कि फॉर 2 years आई वाज नॉट अर्निंग एनी मनी, बट आई वाज स्टिल एबल टू सस्टेन माई सेल्फ एंड जस्ट गो एंड एक्सप्लोर थिंग्स जिसमें कोई पैसा नहीं आ रहा था. तो वो कर पाने के लिए मैंने पहले मरा है ना 10 साल. तो वो करना पड़ता है कभी कभी. इट्स नॉट एन ईजी थिंग. दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग यार. मैं आपको लगता है कि मैं चाहता हूँ हो जाएगा और हो जाएगा, तो नहीं होने वाला बॉस. Hello, Nikhil sir. हाँ जी. I've got a question. Yeah. So, like, please explain, like, what were the major reasons that made you realize that now you don't need, like, to run after the money and stuff? What made you realize that? That, like, आपने बोला था ना कि, like, I was. आपने के पीछे भागना बंद करना है, like, kind of. Yeah. No, very nice. Thanks so much. तो मेरे अंदर ना there was an insecurity before, which was about I was not a very confident kid. I was a very shy and introverted kid when I was growing up.
ऐसे पब्लिक स्पीकिंग तो मेरे से दूर तक नहीं होता था. So I grew up with a lot of insecurities. So initially, when we chase money, we are chasing money because we think it will give us something. That is why I was also chasing money initially. Because I also thought, mere paas money hoga, I will have all those big things around me. So I will also become big. Then all those big things come and you realize, Arey, I still feel the same, yaar. I still feel insecure. I still feel not enough. What is this? This was supposed to give me that, no? ये सब तो आ गया, गाड़ी भी आ गई, बंगला गाड़ी सब आ गया, पर ये नहीं आया अंदर से कॉन्फिडेंस एकदम डीपर नहीं आया. एंड देन आफ्टर अ वाइल इफ यू आर इन अ प्लेस वेयर यू डोंट फील वेरी यू बिलोंग, तो आपको एक डिस्कनेक्ट फील होता है. यू विल फील, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस. एवरीथिंग वाज परफेक्ट आउटसाइड. एवरीथिंग. माय बॉस लव्ड मी, माय customers loved me, my team, I used to have a team of 150 people. They loved me. आज भी मेरे को लोग कॉल करके बोलते हैं, सर आप जो भी करो मेरे को बताओ, मैं आऊंगा. हमने लाइक, यार मैं तो सभी आजकल सोशल वर्क कर रहा हूँ, उसमें क्या आएगा, तू घर कैसे चलाएगा, तू घर पे उधर बैठ. So everyone loved me here, but I was not happy. That is what I realized. That if I'm not happy, how does it matter what is the number in my bank balance? So that gave me the courage. Making all those mistakes finally made me realize that my happiness does not depend on all this. All this cannot get me happiness. Does that answer your question, Karma? That beautifully answers my question. Another question I have, if you may. Sure. The word happiness, what is it to you? I mean, we all know that, no? Don't you know when you are happy? I mean, I do realize, but आपके लिए आपकी happiness differ करती है, right? For me, making money is happiness. What is it for you? It's a feeling, no? You're saying ki what gives me happiness? See, happiness is just happiness, no? Yes, When you're, yes, that's what I'm asking. you're energized, you're happy. It just shows on your face, no? I see. So now you might be getting happiness when you're engaged in something, which is fine. Not a problem. I now have disconnected all those things from my happiness. क्योंकि बॉस मेरी happiness सबसे precious चीज है. क्योंकि पैसा बनाने जाऊंगा, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, तो मतलब मेरी हैप्पीनेस कभी आएगी कभी नहीं आएगी. ऐसी जिंदगी क्यों जीनी है यार? Basically dependent on external factors. Yeah. That means you are signing up for disappointment, no? Because outside things will never go as you want. True. It has not gone perfectly for anyone in this world. Warren Buffett भी पैसा बनाता है, वो उसका भी नुकसान होता है कभी कभी. He comes out and he tells also कि I did this mistake, इतना पैसा मैं बना सकता था, नहीं बना. But you look at him also, he's still happy always. He enjoys making money, but his happiness is not linked with money. True. So you can enjoy things, that's totally fine. Exactly what I was looking for. It is like it's like non-materialistic happiness. Like there is no material required. नहीं देखो, हैप्पीनेस के ऊपर ना एक पूरा सेशन करना पड़ेगा. You guys will have to give me 1 hour. Then we'll go deep into that topic. ऐसे ये 5 मिनट वाला टॉपिक नहीं है यार. ऐसे क्या मतलब गोलगप्पा खिलाऊंगा क्या हैप्पीनेस का आपको? We have, I think. No. I need a proper session for that. Then I need everyone on video. That session, the rule will be you have to be in video, otherwise you are not in the room. Yeah, So this session is as per your rules. That session, if you really want to learn how to get a smile that does not go away, you have to do it as per my conditions, which will be you will have to be on video. Only then I will. if you all want to have a session on that, then you can also suggest that topic in the topic suggestions. Okay. Just Alright. suggestion डाल दीजिए and कोई एक डाल देगा, सब लोग उसको वोट कर दें, फिर वो हो जाएगा. उसमें कोई एक खाने में भी खुशी आती है. बिल्कुल आती है. पर खुशी गोलगप्पे के अंदर है क्या या आपके अंदर है? उसको खाकर मजा आता है मेरे को. अच्छा, अगर सैड हो किसी दिन, बहुत सैड एकदम, उस दिन भी गोलगप्पे खा के उतनी खुशी आती है? हाँ, मुझे तो आती है. आती है. बस आपकी लाइफ सॉर्टेड है यार. फिर क्या करना है? बस गोलगप्पे खाओ दिन में रोज 2 बार, सही रहेगा. हाँ, साइड में से मम्मी की एक आएगी, फिर वो भी सही रहेगा. कोई बात नहीं, उसके बाद एक और गोलगप्पा खा लेना, फिर खुशी आ जाएगी. नहीं, समझ गई मैं. ओके. हाय.
I actually have two questions for you. The question number one is like can you name the company in which the oil company you worked in? And second question, like how did you get the guts to tell no to the president of India? How do I get the guts? No, it was no guts here. It was just like I want to go somewhere. This is not in that direction. होगा प्रेसिडेंट अपनी कंट्री का, मैं क्या करूं? मेरा आईटी का एडमिशन कराएगा क्या? नहीं कराएगा ना, तो फिर मेरे को नहीं जाना उधर. एक हफ्ता जाएगा मेरा, मैं क्यों जाऊं? So I was just very focused in what I wanted. When you have focus, you can refuse 1,000 things. Not a problem ever. The name of my company was Transocean. It is the world's biggest offshore drilling contractor. I used to manage a drilling rig. हम लोग समुंदर में ड्रिल करते थे ऑयल के लिए, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल वगैरह. Okay, Pappu is asking in AI field also they are observing that. That is why they shifted focus from math to psychology, neural networks ka genesis. Okay, no, neural networks were very much maths only, Pappu. Psychology came in much later. Singapore Airlines story. Singapore Airlines story was simple. Yeah, they used to sing. So Singapore Airlines after 10th class has this exam that you can write. Anyone can write. And if you do well in that exam, they will make a short list. Then you come for interviews. They will interview you, and if you're selected, then you get your 11th and 12th is fully sponsored for doing in Singapore. And then after that, you can even apply for their bachelor's degree. So I got selected, and then what was there in my mind was that I found out that IITs were still rated higher than even Naming University. So the thought in my head was, why am I going? Because I want to have best that my country can offer. And plus मेरा ये भी था कि मैं ये नहीं चाहता था, मुझे लग रहा था कि मैं अगर अभी उस समय चला जाता इंडिया से बाहर, तो मेरे को इंडिया से बहुत प्यार था तब भी. तो मुझे लगा कि मैं ना इंडिया से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा if I do my most crucial years of growing up abroad. So because of that I decided, and उस टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस था कि कर लेंगे, आईआईटी निकाल लेंगे, कोई बात नहीं. So that's why I said no to them. मुझे अभी 22 चीजों के बारे में पप्पू सिंह सर, मुझे अकल ही अभी 22 साल में आई चीजों के बारे में. अरे पप्पू, 22 साल में आ गई बहुत बड़ी बात है यार. मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूँ अकल, मेरी आई नहीं अभी. सच्ची. अच्छा, you know why I wrote that message like foolish man वाला? Yeah, and also I would like to say that कई लोग तो यही दिन के आए होंगे कि like what is this thing called foolish person? Okay, of course they will not take it as literal meaning of foolish. सर मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगा क्वेश्चन में. अकल से मेरा मतलब ये नहीं कि विजडम वाली अकल, बट मतलब कि कुछ चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं. लाइक मेरे को 12th तक यही नहीं पता था कि कंप्यूटर्स नाम की कोई फील्ड होती है, बट आई गॉट इनटू कंप्यूटर साइंस एंड एवरीथिंग. मतलब वो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि दिस थिंग एग्जिस्ट एंड दिस थिंग एग्जिस्ट. उस हिसाब से मेरे को थोड़ा मतलब एक्सपोजर के हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अकल 22 साल में आएगी. मेरे को 12th तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो जो जनरली लोगों को पता होता है उस टाइम तक. सो पप्पू, मतलब आपका सवाल बहुत अच्छा है. That is why I kept the title of the top as meet a foolish man. क्योंकि मैं कहीं एक साथ एक चीज शेयर करना चाहता था कि मुझे भी नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ. आज जो मैं करता हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था मैं कर रहा हूँ. मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा था. मेरे पेरेंट्स तो हंसते मेरे ऊपर, कहते हैं यार तेरे को ऐसे लोगों को सांस लेना ही सिखाना था, तू क्यों गया, मतलब इतना पढ़ाई वढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके आईआईटी और ये सब कुछ. तो लाइफ में वी आर ऑलवेज ग्रोइंग, नो. एंड अगर रेस है ना तो सिर्फ अपने साथ रेस है बॉस. एज लॉन्ग एज आप हर दिन, हर महीने, हर साल एक कदम ऊपर जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा कितना आगे है या कितना पीछे है, क्योंकि आप छलांग नहीं लगा सकते ना. अगर कंप्यूटर्स के बारे में आपको अभी पता चला, तो जिसको मेरे को 10th क्लास में पता था कंप्यूटर्स, मैं 12th क्लास के अंदर वायरसेस बनाता था, ठीक है. तो
आप मेरे 12th क्लास के निखिल के साथ में आप कंपटीशन नहीं कर सकते ना, अगर आपको 12वीं में पता चला कंप्यूटर्स के बारे में। मेरी क्लास में मैं सबसे इंटेलिजेंट था, कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर पाता था कंप्यूटर्स में, क्योंकि मैं बहुत टाइम से खेल रहा था कंप्यूटर के साथ। तो क्या हुआ, आपने तो अपनी कदम चलने हैं ना, सो जस्ट अपने रास्ते को देखो। मेरे पास एक मेरी डायरी है, कहाँ गई, चलो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। उसके ऊपर बड़ी प्यारी सी चीज लिखी हुई है, उस डायरी के कवर के ऊपर ही। उसमें लिखी है कि आपको बस एक ही कदम लेना है हर समय। जस्ट दैट नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, एंड एवरीवन्स नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंट, क्योंकि हर इंसान जिंदगी में अलग जगह खड़ा हुआ है। तो आपको देखना पड़ेगा मैं कहां खड़ा हूं और क्या मैं अगला स्टेप ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, बस वही करना है। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। So just talking about the foolish thing, can you see this photo that I shared? सबको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। ओके, तो ये स्टीव जॉब्स का फेवरेट कोट था, ही सेड स्टे हंग्री स्टे फूलिश। सोचो, अब स्टीव जॉब्स जिसने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, आज दुनिया की वन ऑफ द टॉप कंपनीज के अंदर है एप्पल, वो आदमी क्यों बोल के गया ये स्टे हंग्री स्टे फूलिश? क्या लगता है आपको, बताओ? व्हाई डिड ही लाइक सेइंग दैट? सर एक्चुअली ये जस्ट मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर हम इस मेंटालिटी के साथ जाते हैं ना वर्ल्ड में फंक्शन करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि लोग आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एज तक आपको इस टाइप की नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, फिर उनके एक्सपेक्ट करने से अगर कल को लोग एक्सपेक्ट करें कि पप्पू को उड़ना आना चाहिए, तो क्या पप्पू उड़ने लग जाएगा? नहीं सर, उड़ने तो नहीं लगते, सही बात है। तो वो एक्सपेक्ट करते तो उनकी प्रॉब्लम है ना। अब मेरे पेरेंट्स में से एक्सपेक्ट करते हैं, अभी भी करते हैं कि यार मैं फिर से शायद वापस आ जाऊंगा नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ में। अब वो उनकी प्रॉब्लम है, मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा हूं जैसे मुझे सही लगती है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा, हाँ, ये कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा कि मुझे अपने पे इतना भरोसा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, तभी इग्नोर कर पाओगे। इशू वो नहीं है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, इशू ये है कि अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अपने ऊपर देखना है। ये Okay. इसलिए बोला होगा क्योंकि वो कंपैरिजन हम करते हैं, उसके पास बंगला है तो मुझे भी चाहिए। बिल्कुल, और फिर क्या होता है, कंपैरिजन करने के बाद मजा आता है बहुत। उसके बाद जब हमारे पास आता है तो हम दूसरे के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। नहीं, और कभी कभी कंपेयर करके अच्छा भी लगता होगा, आई एम श्योर, कि अरे मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो मतलब मेरे कपड़े कितने अच्छे हैं, मेरे बाल कितने अच्छे हो, तो कितना बेकार है, उसको तो बात करनी भी नहीं आती। कभी कभी इच्छा होता है ना, ऐसे सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग आती है। देखो, कंपेयर करोगे तो दो चीजें होंगी, क्या एक तो सुपीरियोरिटी की फीलिंग आएगी या इन्फीरियोरिटी की फीलिंग आएगी। इन्फीरियोरिटी की फीलिंग आएगी तो गंदी फीलिंग है, सुपीरियोरिटी की फीलिंग आएगी तो लोगों से थोड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, और फिर वो सुपीरियोरिटी की फीलिंग बनाने की कोशिश में लग जाओगे आप कि अरे अब ये आ गई, ये तो अच्छी लगी मुझे, अब ये हमेशा ऐसी रहनी चाहिए। रह सकती क्या हमेशा? कोई ना कोई आपको मिलेगा फिर अगले दिन जो उससे भी ऊपर होगा आपसे, फिर से बुरा फील करोगे, और आ भी गई सुपीरियोरिटी की फीलिंग लोगों को हरा के बार 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 बार, यू विल नॉट बी एबल टू लिव एज योर सेल्फ यार। फिर एंड में ऐसे 40 साल में जाके सोचने लोगे यार मैंने कभी अपने हिसाब से तो जिया ही नहीं। ऐसे है मेरे बहुत सारे दोस्त। ओके, So, do you not हाँ, think like whatever you said right now is something that people learn by time, but not explanation? देखो यार, लाइफ में ना दो तरीके हैं सीखने के। Mhm. अभी मैंने पूछा आप लोग यहाँ क्यों आए हो, लोगों ने बोला मैं सीखने आया हूं। यस, तो दो तरीके सीखने के, राइट। जो बेवकूफ आदमी होता है ना, वो बार बार गलती करता है और फिर भी नहीं सीखता है। जो इंटेलिजेंट आदमी होता है वो गलती करता है और सीख जाता है, और जो वाइज आदमी होता है ना, वो दूसरों की गलतियों से सीखता है।
सोच लो आपको कौन सी कैटेगरी चाहिए. ओके, तो इधर पे Papu is saying about feeling. Chal, Papu, we'll come back to that. If it's feeling, can it be sustained? Because feelings change very frequently. Stanley, very beautiful question, by. Stanley saying, I mean, if he's talking about happiness, I mean, if it is a feeling, can it happiness be sustained because feelings change frequently? Which is very true, no? Feelings always keep changing. Yes. Yeah, definitely. Yeah. So how can you be happy always? Required maintenance. So always को गिराना है. You can be peaceful, and when you're peaceful, you'll be happy. और उसमें कभी कभी गुस्सा आ भी जाएगा, दुख आ भी जाएगा, तो it will go like this. I'll tell you a very simple story. So both me and my wife, we are big meditators. तो हमारी लड़ाई होती नहीं है, साल में कभी एक बार होगी, ठीक है. लास्ट वन हैपेंड, आई रिमेम्बर लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के टाइम पे वाज द लास्ट, नो सॉरी, लास्ट टू लास्ट ईयर 2020 के अंदर हुई थी. उसमें भी क्या हुआ कि वी वर हैविंग अ फाइट, एकदम घमासान, मैं चिल्ला रहा हूँ, वो चिल्ला रही है, एंड सडनली शी सेड समथिंग और मुझे उसकी बात ठीक लगी, तो आई वाज लाइक कि ओके यू आर राइट, चलो लड़ाई खत्म. शी वाज लाइक नहीं बट आई एम स्टिल एंग्री. आई एम लाइक बट यू आर राइट, मैं मान गया, मैं गलत था, मैं आई विल करेक्ट माई सेल्फ. सो आई कुड स्नैप आउट ऑफ इट लाइक दिस. सो इमोशंस आर ऑल्सो देन बिकम एंजॉयबल. वो वेराइटी ऐड करते हैं फिर, बिकॉज यू वोंट गेट स्टक इन एन इमोशन. इट्स जब हम फंस जाते हैं किसी इमोशन में तब प्रॉब्लम आती है. Okay, sir, you are a mind expert, so I think you can explain time management. Okay, we will have to do that in a separate session. Big topic. Psycho Priest is sharing, the feeling I get when I interact with any form of art is happiness. Okay, very beautiful. Okay, someone can help me. Sevak, can you help me with any other thing? Okay, Camelia is asking, confusing. Okay, Sandy is saying, sir, how to decide which spiritual guru to follow for peace of mind and philosophy of life? These days, there are so many gurus and societies out there. Sadhguru, ISKCON, Sandeep Mashveri. It has become so confusing. It's a very interesting question. See, who to follow, अगर मैंने बता दिया तो फिर तो आप मेरे को फॉलो करने लगे ना. क्या बोलते हैं? वो तो खुद ही चूज करना है ना कि हु टू फॉलो. इट्स लाइक सेइंग कि मैं अपनी जिंदगी में ये करूं या वो करूं. कौन बताएगा ये आपको? ये तो आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे आपको ज्यादा कनेक्शन फील होता है, कहां पे आपको लगता है कि नहीं इसको मैं लंबे टाइम तक फॉलो करने को तैयार हूं. क्योंकि 5 दिन के लिए फॉलो करने से किसी को कुछ नहीं होगा. जिसको आप 5 साल फॉलो करने के लिए तैयार हो उसके पास जाओ. वो अपने अंदर आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को ये आवाज, अंदर से आवाज कहां आती है. Camelia saying, what kept you going? Was studying your passion or was there a reason behind it? You said you had no aims. What is the reason that made you consistent? Is it right to have no aims and consistent? Interests keep changing. What to do? Okay. Camelia, when I was studying, that time, before 10th class, there was no aim. That time I was just studying because I enjoyed studying. And that is why I think I did so well. Because I was just doing it कि मेरे को देखना था मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ. There was no aim कि मेरे को इतने परसेंटेज लाने हैं या यहाँ जाना है वो जाना है. Nothing. Now, हाँ, but एक एग्जाम जब लिख रहा होता था तो फिर मेरे पास एम होता था कि ये क्वेश्चन पेपर पूरा करना है, ठीक से करना है, राइट? सो यू हैव स्मॉल एम्स, बट इन द बिगर पिक्चर यू एंजॉय द डायरेक्शन. तो when you're saying, is it fine to have no aims and interest? No, you should have some aims. You should have some goals. तभी वो थोड़ा मजा आता है. You know, in the journey you start enjoying it a little more.
But in what direction should you have your goal? That you have to decide. Should we do what makes us happy now or something that would make us happy in the future? Whatever will make you happy in the long run, that is always the better choice. It's like अच्छा, आज honestly वो I'm really sorry कि आपको ये happiness वाले पूरे process से go through करना पड़ रहा है. But one last thing I would like to ask, decision making. Now that's a good topic to talk on, right? आपके हिसाब से what are the things people should actually know about before making any decision? Any decision, like any kind of decision. ना जेनरिक पूछोगे तो बहुत जेनरिक जवाब देना पड़ेगा ना, फिर मैं स्पेसिफिक नहीं दे सकता. For that, I will just say make sure your mind is calm. Anytime your mind is not calm, you will make a bad decision. आप गुस्से में डिसीजन लोगे गलत निकलेगा, आप ज्यादा सैडनेस में लोगे गलत निकलेगा, आप ज्यादा एक्साइटमेंट में लोगे गलत निकलेगा. मेक श्योर योर माइंड इज काम. शांत मन से डिसीजन लेना चाहिए. ओके, हटके सवाल पूछना चाहता हूँ. आपको बचपन में मार पड़ी थी? अरे बहुत मार पड़ी थी भाई. मतलब मेरे माय डैड वाज इन द आर्मी. माय डैड वाज रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर इन द आर्मी. तो आई हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट चाइल्डहुड. अच्छी डांट पड़ जाती थी. हाथ वाट तो खूब खाई मैंने मार. प्रतीक तिवारी asked a long question. फालतू में साइलेंस हो गया. कैन यू प्लीज चेक? ओके, I will follow you. ओ बाप रे, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यार. चलो, माय नेम इज तुषार. तुषार, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई. आप मेरे से ना डीएम में बात करो यार. दिस फील्स वेरी पर्सनल. आई डोंट वांट टू टॉक इन पब्लिक. Okay, sweet boy is asking, please tell me what you learned about the importance of balance and self-control in life. I think आपका क्वेश्चन ही खुद कह रहा है ना कि दो आर इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग कि मैंने क्या सीखा इम्पोर्टेंस के बारे में. मतलब आपको पता ही है इम्पोर्टेंट है. दैट्स व्हाई यू आर सेइंग कि इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपने क्या सीखा बताओ. Hey, because life में any extreme you go to, you'll get into problem. एक हमारी हिंदी में सेइंग होती है ना, अति सर्वदा वर्जित, कि an excess of anything is always bad. So middle path is the best. Even बुद्धा ने कहा था ये कि मध्यम मार्ग पे चलो. बहुत ज्यादा, हालांकि बुद्धा himself left his house and went into the jungle. हाँ, ये देखो, he left everything, went into the jungle and became enlightened. But after becoming enlightened, he said, ये सब मत करो यार. We walk on the middle path. Why? Because he figured out all that extreme things were not required. सोचो, enlightened होने के लिए भी extreme चीजें इतनी required नहीं थी. So walk in the middle path. Sociopath is asking, are you an avid reader? Yes, sociopath, I'm definitely an avid reader. I read a lot. Tulips is asking, how do we avoid doubting ourselves? Beautiful question, Tulips. Tulips, we doubt ourselves when we are not connected to ourselves. We doubt ourselves when our energy is low. When you are feeling good, when your energy is high, when your prana is high, you will find there will be zero doubt. How do you take care of it? Well, for that, come to the next session. Come to that 1 hour session we will do on happiness and managing the mind. And that we'll do practical things. That's why I need you guys on video on that one. Okay, Sweet Boy saying, I want to hear from your point of view. I bata to diya. I shared, no? Okay, Papu saying, sir, if say at one point I have to be financially self-reliant, I have to go through career I don't like very much. So how can I experiment with stuff when I know I will be drained by the end of the day and I don't have energy to experiment with stuff right now, as much as say 15 years old might have. So what you're saying is you want to be financially reliant. So you have to earn money, or you have to find a way of earning money in something that you enjoy doing. मतलब there is no other way, no? There is just no other way. आपको या तो मतलब ये सब करना पड़ेगा कि नहीं, you will have to just take the pain for a bit, ताकि long run में you can have that freedom.
फाइनेंशियल फ्रीडम। बट सर जैसे मैंने ऊपर भी लिखा था, मैं अभी 22 का हूँ और मेरे को अभी ही पता लगे, तो मैंने स्टार्टिंग ही बहुत सारी चीज़ों में अभी से ही करना शुरू करा, ठीक है। राइट। और एंड सर अभी जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ अभी, तो मेरे को इतना पसंद नहीं है वो करियर, राइट। और मतलब मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मेरे को अभी ये भी नहीं पता है कि मेरे को पसंद है, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें करी नहीं है लाइफ में। तो वो मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मेरे को करनी है वो बहुत सारी चीज़ें, तो उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम मेरे पास है नहीं, क्योंकि जॉब करूँगा तो शाम तक थक जाऊँगा, जब थक जाऊँगा तो मैं एक्सपेरिमेंट कहाँ से कर सकता हूँ फिर। बस तो इसका सोल्यूशन अगेन वही आ गया ना, एनर्जी की ज्यादा चाहिए, है ना। प्रॉब्लम यही है कि लाइफ में एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा आती है, क्लैरिटी ऑफ माइंड भी आती है, और यू आर एबल टू डू मोर एज वेल। तो एनर्जी कहां से आएगी, सवाल ये है। तो एनर्जी कहां से आएगी ये अगले सेशन में, वहां मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कहां से आती है एनर्जी। आई टीच यू सम टेक्निक्स विच विल गिव यू एनर्जी, जो अगर रात शाम को थके भी हुए हो 5 बजे भी, अभी ये सेशन से पहले आई डिड सम थिंग्स, बिकॉज मेरे को बुखार है यार, सुबह से बुखार है, मेरे को कोविड है। आपको देखते हुए लग रहा है मेरे को कोविड है? नहीं, डिस्पाइट कोविड में बैठा, आई डिड ऑल माय टेक्निक्स। आई एम लाइक यार करना है तो करना है बस। तो बताओ, मेरे को कल 104 बुखार था, आज सवेरे भी 101 बुखार था। सो वी डोंट नो दीज थिंग्स, हमें पता नहीं है अपनी एनर्जी कैसे मैनेज करनी है, अपना माइंड कैसे मैनेज करना है, ये सीखने की जरूरत है। दैट इज व्हाट द आर्ट ऑफ लिविंग इज, दैट इज व्हाट व्हाई दिस एंटायर फाउंडेशन एग्जिस्ट्स। ये बेसिक्स हमें वापस लोगों के पास लेकर जानी है। ओके सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो ना। The question is, sir, like, what's your comment on these fake gurus, sir? सिर्फ आप YouTube एड्स में देख लीजिए कि ऐसे बहुत सारे YouTube एड्स हैं जिसमें बताते हैं कि पैसे कि हमारे सेमिनार्स अटेंड कीजिए। मैं इससे 2-3 इससे मैंने एड्स देखे, और मेरे ख्याल से कि हम लाइक एन एवरेज इंडियन को ज्यादा मोटिवेशन चाहिए विल से, क्योंकि मैं अगर आप YouTube में सर्च करेंगे या फिर गूगल में सर्च करेंगे, अगर आप ये कीवर्ड इस्तेमाल करोगे लाइक मोटिवेशनल वीडियो, तो जो लाइक देयर आर टू चैनल्स दैट आई प्रेफर व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन। वन इज डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड संदीप माहेश्वरी। तो उसके कहीं नॉकआउट वर्जन आ जाते हैं। सो डज दैट मीन लाइक वी इंडियंस लाइक प्रेफर मोटिवेशन ओवर विल पावर, या फिर हम इंडियंस को हमें एक थोड़ा सा स्मॉल पुश चाहिए रहता है हर एंड्योरेंस के टाइम पे? व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? यार आस्क मी ए पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि जनरल टॉपिक्स के बारे में, दुनिया के बारे में कमेंट करके मेरा क्या फायदा, मतलब आपका क्या फायदा होगा बताओ उससे। मैं किसी तीसरे आदमी के बारे में आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, उसमें आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ नहीं, मेरी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं। आपका कोई पर्सनल सवाल है तो आप पूछो। नहीं, मैं मेरे एक्चुअली को गॉसिप नहीं करनी लोगों के बारे में। नहीं नहीं, गॉसिप की बात नहीं है सर, लेकिन ये थोड़ा सा इट फोर्सेस अस टू थिंक लाइक क्रिटिकली सर। नो, what is your problem or what is your concern, what is your question? माय क्वेश्चन है, जो भी रियली नीड मोटिवेशन सर, अगर हमारे पास विल पावर ही ना हो। नो, बी क्या होता है अपने बारे में पूछो। डू यू नीड मोटिवेशन? समटाइम्स आई डू सर। बस यू हैव योर आंसर। नो, डोंट प्रोजेक्ट ऑन टू अदर पीपल। हम क्या करते हैं, हम अपनी इशू से को छुपाने के लिए दूसरों पे प्रोजेक्ट करना शुरू करते हैं। मैं नहीं करना चाहता किसी पे प्रोजेक्ट। यहां सिर्फ आप हो और मैं हूं, और मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, आप भी अपने बारे में बात करो। तीसरे इंसान के में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट है वो। यही तो करते ना हम, दूसरे इंसान के ऊपर, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुझे बुला रहा है, आई वाज लाइक कि छोड़ना, क्योंकि मेरा टाइम कम था, मेरा फोकस था, मेरे को कहां जाना है। आप सोच रहे हो उसको क्यों मोटिवेशन चाहिए, उसको क्यों मोटिवेशन चाहिए? अरे चाहिए होगा, उसकी प्रॉब्लम। Why don't waste your precious time and energy on it? हाँ, आपका कोई सवाल है, आई एम मोस्ट हैप्पी टू आंसर। ओके, अंडरस्टैंडेबल सर। डोंट थिंक आई एम मेकिंग इट पर्सनल फॉर यू। नो, कि हम सब करते हैं, मैं भी होता करता हूं। आज तक मेरे से अनअवेयरनेस में ये होता है, फिर कभी देन आई कैच माय सेल्फ, ओ मैं फिर से यही कर रहा हूं, अगेन आई एम गोइंग इनटू ब्लडी कंपैरिजन।
anyone who has ever done anything good in life has never been in comparison. आपको लगता है महात्मा गांधी बैठ के कंपेयर कर रहा था कि हाय जिन्ना तो ऐसे कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, या हिटलर वैसे कर रहा है, मैं तो ऐसे नंगा बैठा हूँ, हिटलर देखो इतनी आर्मी लीड कर रहा है. आपको लगता है? Okay. So it's saying, for an 18-year-old, what will you prefer? Jack of all trade or master of none, or mastering things one at a time, one by one? That is a personal question. What you want to do, that is best for you. There are some people who are, एक बहुत अच्छी किताब आई थी, there was a big article called, they say कि hedgehogs and porcupines. तो porcupine is master of one, उसके पास बहुत sharp वो होते हैं, needles होते हैं, which वो कर सकता है. Hedgehog is more intelligent, वो different चीजें छोटी छोटी कर लेता है. दोनों टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, दोनों टाइप के लोगों की वैल्यूज है दुनिया में, राइट? क्रिकेट टीम के अंदर बैट्समैन होता है, बॉलर होता है और ऑलराउंडर भी होता है, सबकी वैल्यू है ना. आप देखो आपको क्या सूट करता है. मोटिवेशन इज अ पाथ, मोटिवेशन के लिए भटक रहे हैं. Okay, sweet boy saying, I hear a lot about being independent before 20. Now I'm 16. Will miss much if I'm not independent before 20. What can you tell by your experience? Do I just focus on academics and generating some other source of income as well parallelly? I mean, till you don't have to generate an income, why do you want to generate an income? Skills generate karo na. Generate, invest your time and energy in skills. हाँ, वो स्किल्स जनरेट करने के लिए पैसे की जरूरत है, तो देखो कहां से कमाना है पैसा. मम्मी पापा नहीं दे रहे तो देखो कहां से कमाओगे पैसा. बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से ज्यादा बी बिकम इंडिपेंडेंट इन योर पर्सनल स्किल्स, इन योर प्रोफेशनल स्किल्स. मुझे ढंग से लिखना आता है कि नहीं आता है, मैं ढंग से बोल सकता हूँ कि नहीं, उसके ऊपर ज्यादा टाइम फोकस करो. यू हैव अ लॉन्ग टाइम, देन एक बार आपके पास स्किल्स है, पैसा आएगा ही आएगा. पता है, एक ना मेरे को तो मेरे एक आईटी के सीनियर थे, उन्होंने एक बड़ी प्यारी चीज मेरे को एक दिन समझाई थी. ही सेड, निखिल, किसी भी इंडस्ट्री में ना अगर डाउनटर्न भी आता है, अगर बुरा समय भी आता है, जो टॉप के 1% लोग हैं ना, उनके लिए कभी बुरा समय नहीं आता. वो लोग कभी फायर नहीं होते, उन्हें कभी नहीं कहा जाता छोड़ने के लिए. आप बस ये देखो आप कहां के 1% बनना चाहते हो. Okay, I think I've gone pretty much through all the questions. So if anybody is left with any kind of questions regarding life, happiness, and any kind of personal problem, they can share. Okay, if nothing, in the meanwhile, I'll say something. Yeah, See, please. at the age group where most of you are, there was a study in Stanford that was done. उन्होंने जो लोग ग्रेजुएट हुए, उसके बाद ग्रेजुएट होने के बाद उनको फॉलो किया, उनकी सक्सेस को फॉलो किया, and then they went back and looked at, they analyzed what factors played a role in the success of these people. So do you know, so they found broadly two categories of factors. One was personal skills, other was technical or professional skills, right? Suppose even आप एक कोडर भी हो या किसी भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, मैं ऑयल इंडस्ट्री में था तो मुझे ऑयल इंडस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डिड स्टैनफोर्ड स्टडी फाइंड? What is the percentage role that personal skills played and what is percentage role that professional skills played? बताओ, is it 50-50, 60-40, 60 in personal skills, or 40-60 or 30-70? What do you think? 80-20 है क्या सर, पेरेटो प्रिंसिपल वाला? हाँ, करेक्ट, 80-20. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, बहुत आसान है इसको समझना. आप किसके साथ काम करना चाहोगे? जिसके साथ काम करना आसान है या जिसको बहुत आता है और झाड़ता है मुझे कितना आता है, राइट? जिसके साथ, who is good at managing his relations, who's good at being a good person, interacting nicely, communicating nicely. ऐसी इंसान के साथ आप काम करना चाहोगे ना. ऐसी इंसान के साथ सब लोग काम करना चाहेंगे तो ये इंसान ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके साथ काम करना चाहते हैं. They'll be happy to have him as a leader also after a while, right?
So these personal skills, unfortunately, we are not taught very much in our schools, especially India में हम लोग ज़्यादा नहीं सिखाते. That is where, all these things that we were talking about. How do you manage your mind? How do you keep your doubts away? Energy कहाँ से लाओ ज़्यादा? How do you make sure that, you are aligned with who you are, ताकि आप उस डायरेक्शन में चल सको जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है. ये सारी चीज जो है, ये सब अंदर से शुरू होती है. ये सब अंदर की चीजें हैं. अगर आप फ्रस्ट हो, इफ यू आर स्ट्रेस्ड और एंग्री वन डे, you cannot talk nicely to the other person. It'll show, no. If someone is irritated and they talk to us, we can feel it, even if the words are very beautiful. But we can feel that they're not really interested in us. So all of that starts from inside. तो वो inside को कैसे manage करना है उसके ऊपर we will take one other session. Like I said, I will need everyone on cameras there. Apart from that, it'll be about a 1 hour session, and we'll do some practical things in that. We'll give you an experience of how a calm state feels like, how do you get more energy and all of that. Sounds good? Yes, it's interesting. Yeah. Well, sounds definitely good. But I'll have to make one point. Sure, please. You said camera has to be on, not that the face has to be visible. So, being precise, that can be done, right? If you're very sick, you can. I need to see your body when I teach you some techniques, whether you're doing it right or wrong. That is my responsibility, if I'm teaching you something. So I have to make sure of that. That's why I need the cameras on. Okay. Why is asking, sir, do you do all such events for free? No, we do some events for free, and some things which are life-changing, there is a small donation for that. As an organization, we earn our money to do service projects. We are the world's art of living I'm talking about. We are the world's largest volunteer-driven organization. We do a lot of disaster relief. Even in COVID time, we distributed 80 million meals and whatnot we've done. So this is how we earn our money when we teach the full programs. So abhi to we are not going to do that. Abhi we will just do the short sessions here and for one program later. Okay, Papu is saying, sir, can you please speak a little about meditation and is it related to flow state? I felt flow state when I was meditating. Papu, meditation leads to flow state. There is a lot of research that is done which has shown that there is a flow state. It is a proper, chemically, it can be seen in the body. In fact, I have documents if you want to see. The MRI scans actually show how the brain looks when you are in a flow state. And meditation, people who meditate have a much higher flow state than people who don't meditate. This is why PV Sindhu meditates. A lot of people. Narendra Modi also meditates. The world's biggest hedge fund manager also meditates. A lot of successful people. That's why they meditate. Sir, it means you do work on donation and for free, small for free, big for this thing. कुछ कहा कुछ ऐसे लेते अरे बाबा so why am I asking something, so I'll clarify. So we have a program in which we teach what is called Sudarshan Kriya. Sudarshan Kriya is a very, very powerful transformative technique, but it is so powerful and so advanced technique, it takes us about 4 days to teach it. Now that is a long time commitment from our side also. So uske liye we have a small donation. The donation goes 100% to our service projects. That's why we call it a donation. Otherwise, all sessions that we will do here on this group will all be free for you. Don't worry. Okay, so I guess we have talked a lot about various kinds of things like meditation, life, education, finance, and everything. Just one second. So, lazy Asquala saying meditation based nahi ho pata. Lazy Asquala, you come to the 1 hour session that I'm saying. I'll use. Let's see if meditation hota hai. Yeah, we will of course conduct it. We'll be informed for that. So अगर कोई भी questions कुछ भी बचा रह गया तो please आप पूछ लीजिए क्योंकि we'll be planning to end it in 10 minutes. Yes sir, excuse me sir. जो मेडिटेशन के टाइम में ब्रेन में एक स्टेट टाइप का अचीव होता है तो वो सब्जेक्टिव होता है या फिर
मतलब एक फिक्स्ड होता है कि आपको ऐसा ही दिखेगा, जो भी लोग मेडिटेशन करेंगे उनको ऐसा ही अचीव होगा एज ब्रेन में। Patanjali has listed out about 9 or 10 types of samadhi in Patanjali Yoga Sutras. So you can go and have a look at that. उसको पढ़ लेना यार, अभी मैं क्या योगा के समाधि के टाइप बताऊँ, लोग बोर होंगे. You can search for types of samadhi on the internet. You'll find क्या क्या टाइप के meditation states होते हैं. Sweet boy saying sir regularly नहीं हो पाता. Sweet boy, you come for that session, then we'll talk about it. Okay. ठीक है जी. I think thank you so much for being such an amazing audience and so interactive. Sir, we would like to thank you, sir, for giving your time for us, actually. So My a lot pleasure. of things about life and a lot of knowledge has been shared by you to all these young people. So I guess now no more questions are there. Let's just सर मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, if you don't mind. okay. No, please. सर आप एक स्टार्टअप में आप एक इन्वॉल्व थे ना सर, आपने अभी आपने स्पेसिफाई किया था, राइट? तो आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल स्टार्टअप क्या होता है? कोई टिप्स है एंटरप्रेन्योर्स के लिए? और आपने कहा था कि जो वाइज मैन होता है वो दूसरों की गलती से सीखता है. सो आई थिंक आई वांट टू चूज द ऑप्शन 3 सर. सो यू हैव एनी टिप्स for being a successful entrepreneur or how to run a successful startup? Yeah, it's a very big question. Again, it's like उसके ऊपर तो there are books and books and books of that. An entrepreneur is basically about taking risk and dealing with uncertainty. The best entrepreneurs are the ones who are comfortable in uncertainty. जब टीम्स भी बिखरती हैं, सबसे वो इसलिए बिखरती है बिकॉज लोग अनसर्टेनिटी नहीं संभाल पाते. So again, make sure you are able to mind your mind, you are able to keep a calm mind, and then रिस्क है वो तो कभी रिटर्न देगा, कभी फेल होगा. आई हैड वन मोर स्टार्टअप बिफोर दिस वन, उसमें कोई इन्वेस्टर नहीं आया था, वो फेल हो गया था. Startups will sometimes fail, sometimes they will give risk, but if you are steady inside yourself, much greater chance of success. By the way, I was also an investor in startups for a while, तो मैं startups evaluate भी करता था. And the guy who got me into investing in startups was भावेश अग्रवाल, जो अभी ओला के CEO हैं. उनकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. I met him when he was just in a struggling phase. He was just raising some money from us. But yeah. तो भावेश को भी नहीं पता था वो क्या करने वाला. पता है वो क्या करता था पहले जब मेरे से मिला था? Can anyone guess what Ola founder used to do? उसका फर्स्ट बिजनेस मॉडल वाज कि ऑफिस की जो टैक्सीज होती हैं वो ऑफिस में एक बार लोगों को लेकर आ गई, उसके बाद वो खाली बैठी होती है जब तक वापस नहीं जाना है. उस टाइम पे आई विल यूज देम एज टैक्सीज आउटसाइड. दैट इज द फर्स्ट बिजनेस मॉडल भावेश स्टार्टेड फ्रॉम. इट डिड ओके, रीजनेबली वेल, बट उसकी फास्ट साइड ये थी, he said even at that time he kept a name which was generic Ola because he knew कि मैं ट्राई करूंगा कुछ, I might have to pivot कहते हैं उसको, I might have to change what I'm doing. So मैं नाम ऐसा रखता हूँ which will, मेरे को नाम नहीं चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं करूँ बाहर नहीं जो भी उसके अंदर. So now from doing that he's now making electric scooters and all that. So बाकी तो स्टोरी उसकी काफी पब्लिक है. ठीक है. Then shall we call it a day? Yeah, thank you for the session, Nikhil sir. या सो अगर किसी भी तरह के सजेशंस आप लोग को आगे के सेशंस के लिए है तो प्लीज़ उसको सबसे ऊपर आपको टॉपिक सजेशंस का एक चैनल दिख रहा होगा, वहाँ पे डाल दीजिएगा, फिर हम लोग ऐसा कर लेंगे. एंड या सो लेट्स एंड द सेशन. होप यू ऑल आर रियली एंजॉयड द सेशन. एंड so Nikhil bhaiya, hope you get well soon and share your knowledge to us like this again and again. Most happy to. Thank you all. Thank you all. आप सब लोगों ने टाइम निकाला और अच्छे से सुना. And
Yeah, if you have any personal questions, you can message me directly also, and otherwise we'll meet with for more sessions here. Thank you, thank you. Good night, and have a great evening. Good night. Take Have a great weekend. Thank you, sir. Get well soon, Thank sir. you, thank you. Bye bye. Have a great day, everyone. Non-water session. Hello, all for one भैया. Hello. Good evening, everyone. Good evening, Miss अच्छा Vanshika. ये रिकॉर्डिंग ऑफ हेलो करके प्रतीक भैया. ये सब हेलो हेलो सुनाई देगा सबको. हेलो 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 हेलो, मैं ज्यादा बोलूंगा. अब मैं बोलूंगी. हेलो 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 प्रतीक हेलो. भैया. दिया लाइक इसी सब में क्या कहीं क्या डार्क पता है यार. इस हेलो सेवा हेलो. भाई अनम्यूट कर